ख़राब है, मेरा तो किस्मत ख़राब है। मैं रोज़ सुबह सोचती हूँ कि मैं जिम जाऊँगी पर मैं बिल्कुल नहीं जा पाती। जिम में सब मुझे देख के मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं इतनी मोटी हो गई हूँ यार, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मेरा लाइफ कितना ख़राब है यार, सब लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही क्यों अटकी हुई हूँ। मेरा लाइफ कितना ख़राब है। इफ़ यू आर समवन हु कॉन्स्टेंटली थिंक लाइक दिस, देन लेट मी टेल यू, you are ruining your life. Positive thinking means a positive life. Everything that you think is exactly what you attract in your life. आप अपनी सोच बदलो, आपका लाइफ बदल जाएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट टू से दिस, मैंने अपने लाइफ में ये इम्प्लीमेंट किया है एंड आई हैव सीन मेजर डिफरेंस इन माई लाइफ. Hi everyone, my name is Anushka. Welcome to my channel. I hope you all are doing absolutely great and are staying safe at home, keeping good care of yourselves. And आज के वीडियो में we're gonna talk about how positive thinking has changed my life and how you can change your life just by changing your mindset. So if that is something that interests you, then keep on watching. अरे यार ये सब बकवास है, पॉजिटिव सोचने से कुछ पॉजिटिव नहीं होता, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं. I was also like this 2 years ago. मुझे भी लगता था पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू है, ये सब रियल नहीं है. But then I found the science behind it. Neuroscience says there's a part in our brain called RAS or reticular activating system, and its job is to sort the information that comes to our brain. Now, at a given point of time, there is 11 million information that comes to our brain, and at a given point of time, our brain can process only about 26 of them. So there's a lot that gets filtered out. And this filtering out is important because it helps to decide our brain which information is important enough to be brought to conscious awareness. And this RAS starts working the moment you wake up. And this RAS is asking you, what is it that you're trying to look for in the entire day? So if you constantly tell your brain कि मेरा तो जिंदगी खराब है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, रोज मैं अपना टाइम वेस्ट कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे रील चलाते चलाते, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, God, my life sucks. So your brain will be like, okay, thank you. I will filter out all the information that comes to your brain for ways, times and events that actually suck to promote the fact that your day is going to suck. So even if something good happens in your day, you might not notice it or you will just downplay it. However, if you tell कि मैं तो दुनिया की सबसे लकी इंसान हूँ, मेरे लाइफ में सब अच्छा होता है, every day I wake up and I have the best day I've ever had. So कि अगर मैं कभी जिम नहीं गई तो आज मैं पहली बार जिम जाऊँगी and I'm gonna have the best workout of my life. Then that is what your brain is gonna look for because that's what you have told your brain. That is how our brain works. I'm not making all this up. This is science. And science is telling you पॉजिटिव सोचोगे लाइफ में पॉजिटिव होगा. आई हैव गिवन यू ऑल द जस्टिफिकेशन देयर इज टू गिव. ना 2 साल पहले जब मुझे इन सब के बारे में पता चला तो इतने भारी भरकम इंग्लिश और इतने भारी भरकम टर्म्स मुझे समझ में नहीं आए थे. आई अंडरस्टूड इट इन अ स्पिरिचुअल मैनर. हाउ आई अंडरस्टूड इट वाज quantum physics says that everything is energy. Your thoughts, your emotions, your actions, everything carry energy. Hence, whichever emotions you feel in your brain, everything has a frequency to it. Now, if you're constantly thinking मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं होगा, I suck, my life suck, all of these are very negative energy. And that's what you're projecting into the universe. It's like having a ball. अगर आपके पास लाल कलर का बॉल है, आप उसको ऊपर फेंकोगे तो वही सेम बॉल आपके पास वापस आएगा, राइट? ऐसा तो नहीं है लाल फेंकोगे हरा आएगा. दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, राइट? सो इफ आई एम कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्टिंग इन टू द यूनिवर्स दैट माई लाइफ सक्स, आई एम प्रोजेक्टिंग नेगेटिव एनर्जी इन टू द यूनिवर्स, same thing is gonna get manifested and same thing is gonna come in my life. That is how I understood it. And you can try this on your own. आपने लाइफ में भी देखा होगा कि जो इंसान कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है ना मेरा लाइफ खराब है, लाइफ खराब है, 5 साल बाद आप उससे जाके मिलो, 5 साल बाद भी वो यही बोल रहा होगा कि मेरा लाइफ खराब है, उसकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ है. ऑन दी अदर हैंड आप किसी से मिलो जो हमेशा बोलता है मैं तो मस्त हूँ, मेरा लाइफ मस्त चल रहा है, आई एम हैविंग एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, 5 साल बाद आप उनसे मिलो तभी भी उनका लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा. बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग, दैट्स व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग. ठीक है, मान लिया कि जो सोचोगे वो होगा, पर अगर सिचुएशन नेगेटिव है तो नेगेटिव थॉट तो आएंगे ना. अगर मेरे को प्रेजेंटेशन देना है तो मैं नर्वस तो होंगी ना. जिम कभी गई नहीं हूँ, जिम जाने से पहले डर तो लगेगा ना. उस टाइम में कैसे पॉजिटिव हो जाऊँ? थॉट्स तो अपने आप दिमाग में आते हैं, उस पर किसी का कंट्रोल थोड़ी है. आई यूज्ड टू थिंक एग्जैक्टली द सेम. इसीलिए मैं बताने वाली हूँ थिंग्स दैट आई डिड, चेंजेस दैट आई मेड इन माई लाइफ दैट चेंज्ड माई माइंडसेट. सबसे पहले whenever a problem comes to your life, you're gonna say to yourself, all is well,
Everything is working out in my highest good, and out of this situation, aka the problem, everything good is gonna come out. Which means, let's take an example. आज आपका प्रेजेंटेशन है आपके क्लाइंट के साथ, आपके CEO के साथ आपका आज प्रेजेंटेशन है, ठीक है. आप अपने लैपटॉप लेके बैठे हो, आपको बोला गया है स्क्रीन शेयर करने, एंड सडनली योर स्क्रीन शेयर ऑप्शन गेट्स टर्न्ड ऑफ. व्हाट आर द थॉट्स गोना कम इन योर माइंड? हे भगवान, मेरा तो आज गया, प्रेजेंटेशन गया, CEO इज गोना थिंक आई एम द वर्स्ट एम्प्लॉय एवर. क्या करूँ, मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया, छी ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, एवरीवन इज गोना थिंक दैट आई एम स्टूपिड. ऐसे थॉट्स दिमाग में आना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है और हम लोग के साथ होता भी है. What you have to do in those situation is you're gonna say no, I'm only gonna think positive. ये प्रेजेंट ठीक है, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, मैं कॉल दोबारा से कनेक्ट करती हूँ, स्क्रीन शेयर मेरा दोबारा से हो जाएगा एंड ये प्रेजेंटेशन मेरा बहुत अच्छा जाएगा. एवरीवन हियर इज गोना थिंक कि इसने प्रेजेंटेशन कितना अच्छा दिया, ये सोचो. एंड यू विल सी somehow things will start working out. And even if things are not working out, you are more calmer now. अब काम हो, अब आपको सही चीज़ दिमाग में आएंगी कि ठीक है मैं कॉल डिस्कनेक्ट करती हूँ, अच्छा ठीक है ये नहीं हो पा रहा, मैं किसी और का लैपटॉप यूज़ करती हूँ. यू विल स्टार्ट गेटिंग सोल्यूशंस इन योर हेड एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. सो व्हाट यू डिड, इंस्टेड ऑफ whining and sulking and being anxious and being nervous about the situation, what you did, you identified your negative thought and replaced it with the thought that best serves you. Now every time you are in a situation, hold yourself accountable, deliberately identify the negative thought and replace it with positive thoughts. Thoughts that best serve you. ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं, ऐसे लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. थॉट्स अपने आप दिमाग में आते हैं, थॉट्स अपने आप दिमाग से जाते हैं, थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. If you're thinking this, I'm judging you. Okay, I'm not, I'm just kidding, I am judging you. In 10 seconds, I'm going to show you that you can control your thoughts. Just give me 10 seconds, okay? With me, do this. All you have to do is in your head, मन में, दिमाग में, कहीं भी अपना नाम जोर से चिल्लाओ. कर लिया? Now अपना नाम अपने दिमाग में विस्पर करो, एकदम आराम से, पोलाइटली. कर लिया? You see how you are able to do this? That's because you can control your thoughts. हम लोग बस ये सोच लेते हैं कि हम थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, when in reality you actually can control your thoughts and you should. ओफो, इतना बड़ा वीडियो देख लिया, पर इतना डेली लाइफ में करेगा कौन? इतना टाइम किसके पास है इतना देखने का कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या देख रही हूँ? इतना कौन करता है यार? इसका आंसर तो अब मेरे पास नहीं है. ये वही इंसान करेगा जिसको अपना लाइफ बेटर करना है. पूरे 24 घंटे में अगर आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, यू डोंट हैव टाइम टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू डोंट हैव टाइम टू चेंज योर रियलिटी, यू डोंट हैव टाइम टू मेक योर रियलिटी बेटर, तब फिर तो मैं क्या ही बोलूँ. तब तो फिर इफ़ यू आर हैप्पी वेयर यू आर, गुड फॉर यू, गो अहेड, लिव योर लाइफ. पर अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है, देन दिस इज द वे टू डू इट. बिकॉज वंस योर माइंड सेट इज राइट, you can manifest anything you want in your life like this, because I have done it. I have manifested literally everything that I have in my life right now. The people that I have in my life, the friends that I have in my life, the money that I have in my life, the job that I have in my life, the city that I'm living in, the PG that I'm living in, everything to the dot I have manifested in my life. And that is why मैं इतने डंके की चोट पे कह रही हूँ कि having your right mindset is the key to everything. And that brings us to the end of this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, do not forget to give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel below if you guys haven't already. Next video is going to be about how I manifested my dream life. So do not forget to subscribe if you haven't. I'm going to see you guys super soon. Bye.